जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जैसे आप सब देख सकते हैं, मेरे साथ है मेजर जनरल हर्षा कक्कर, जो हमको थोड़ा-सा एक सेंस बताएँगे। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मिसाइल की स्ट्राइक हो जाती है ईरान से आके, कभी कोई मार देता है, कभी कोई मार देता है, कभी कोई मार देता है। हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? लेट्स ट्राई एंड मेक सम सेंस बिकॉज़ आसिम मुनीर का कुछ तो प्लान होगा। समथिंग विल बी देयर। व्हाट इज़ हिज प्लान? लेट्स ट्राई एंड डिसाइफर। करना क्या चाहता है भाई? हो क्या रहा है? तो सर नमस्कार, वेलकम टू द शो। Thank you, Adi. Thank you. सर, लेट्स हिट अपॉन द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ अभी ये तो रीसेंट सबसे बड़ी न्यूज़ है। ईरान ने बोलते हैं कि भई आके इन नो सिंपल वर्ड्स ठोक दिया, और वो भी सीपीईसी की लाइन पे आके ठोका, वही हाईवे पे आके ठोका है। सेम ब्लडी 2 प्लेसेस व्हिच इज़ ऑन द सीपीईसी, सो वेरी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। बट सीपीईसी, वीपीसी हटा के द शेयर फैक्टर दैट ईरान वेंट इन ठप, एंड उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़े, वो बोलते हैं हम तो दोबारा करेंगे। But you're seeing another statement, a core statement निकला है of the Chinese Foreign Ministry, which is asking दोनों sides को to exercise restraint. और दोनों, both of them are Chinese allies. और ये नहीं कि possibly now Pakistan will tell China कि भाई हम भी तो कुछ करेंगे, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब वो भी कुछ करना चाहेंगे। रूमर है, somewhere on social media I've come across, पाकिस्तान लॉन्च टू J-17 एक गायब है। अब ये नहीं पता सही है या नहीं है, दैट विल कम टू नो इन अ डे, क्योंकि DGISPR कोई जल्दी कुछ रिलीज नहीं करता। जब सोशल मीडिया में निकल जाता है तब जाके रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे ईरान इज हिट, नॉट ओनली ईरान, इंडिया हिट इन बालाकोट, इंडिया हिट ऑन सर्जिकल स्ट्राइक्स। उसके बाद दी अफगान आर्मी उनको सॉर्ट आउट कर रही है, तालिबान। अब तालिबान छोड़ो, उसके बाद टीटीपी को जो जो चेक पोस्ट पसंद आया या जो आउटपोस्ट पसंद आया वो छीन लिया। उधर बलूच ये कर रहे हैं कि भाई तुम सड़क पे निकलो, हम वहां बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। उस सब को छोड़ो, ईरान जिसको जिसके फॉरेन मिनिस्टर को केयर टेकर पीएम आधे घंटे पहले मिला है, उसके बाद स्ट्राइक कर दी। इट एक्चुअली शोज व्हाट ईरान केयर्स फॉर पाकिस्तान। फॉरेन मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द केयर टेकर पीएम इन डावोस, बातचीत हुई, एग्जैक्टली हाफ एन आवर लेटर स्ट्राइक हुआ। दैट मस्ट हैव बीन द लास्ट वार्निंग। ही मस्ट हैव टोल्ड द केयरटेकर पीएम कि भैया तुम अपने इनको जैश अल अदिल को संभालो, नहीं तो विल गेट आफ्टर यू। अब पीएम ने बोला होगा मैं क्या करूं, डीजी आईएसपीआर को बोलो, रावलपिंडी को बोलो, तो देव हिट। नाउ द पॉइंट इज, इफ एवरीवन इज टेकिंग पाकिस्तान टू दिस लेवल, देयर इज, आई मीन समवन शुड बी क्वेश्चनिंग, आसिम मुनीर तुम कर क्या रहे हो भाई? व्हाट आर यू डूइंग सिटिंग देयर? The TTP gets after you, the Baluch is getting after you, now Iran is sorting you out. It has launched two strikes and you are able to do nothing. Strike की अगले दिन he calls a meeting of the corps commanders, वो चल रही होगी अभी, on how to retaliate. उधर चाइना बोल रहा है सुधर जाओ, cool down. There is something which, I mean, they have to do. It can't be that this is the situation of a country and you're a nuclear power. Best part is, आप और Iran are supposed to be allies. Yes, lovely of Imran Khan when he went to Iran on a visit with the army chief Bajwa, उसने बोला ईरान में that हम समझते हैं your problem is of terrorist groups located in Pakistan. उसने admit किया, बाजवा objected, but इमरान ने तो गन फायर कर दी अपनी। उसके बाद also, if you haven't cooled down, then you're asking for trouble. After all, how much can Iran take? Not only here, Iran is also fired at Iraq. वहां पर भी उसने 2 टारगेट को कुर्दिस्तान में हिट किया है। So Iran is now giving a message that we are going to retaliate. Now it's about time Pak reacted. अब उनको वार्निंग मिली, उनको एडवांस इंफो मिला, कुछ किया नहीं तो अब स्ट्राइक आ गया। अब जो क्लेम करो सिविलियन मरे, वो मरे, बट द बेस्ट पार्ट इज जैश ने भी ट्वीट किया कि ईरान ने हमको स्ट्राइक किया है, एंड उनके ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा कि गलती से मिसाइल बाईपास्ड अस एंड लैंडेड एल्सवेयर।
दैट इज सेकेंडरी. द फैक्ट इज वो टेररिस्ट ग्रुप ने बेस्ड इन पाकिस्तान is tweeting an Iranian strike, confirming जो ईरान ने किया है, sending a message. Casualties is immaterial. पर ईरान से जो मैसेज आया है, we will not hesitate. ये तो possibly this might just be a trailer. कि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया, you will actually see possibly the first half of the movie. The second half, where the main dhamaka is to be felt, may come later. But it is a clear warning by Iran. एंड इमेजिन द टेररिस्ट ग्रुप ट्वीट कर रहा है कि ये हुआ है, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? नहीं, वो तो सब बेचारे डिनाई भी नहीं कर सके, नहीं तो वो बोल देते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो भी नहीं कर सके वो लोग, दे कुडंट डू दैट आल्सो. बट सर इसमें दो तीन चीज बाहर निकलती हैं. पाकिस्तान की अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो हमने देखा कि ईरान के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ था, उसका कनेक्शन तो कहीं ना कहीं ईरान के, मैं काफी आई जस्ट स्टार्टेड लुकिंग एट सम ऑफ देयर एनालिस्ट, वो बोलते हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान से आया है. एंड बड़ा सी क्लियर है पहले उनके लिए. पहली बार ईरान सेड इट इज अ यूएस इजराइल एक्शन. हाँ, बट ये जो रिसेंट अटैक हुआ था विच किल्ड 11 इरानियन ट्रूपर्स नियर द बॉर्डर, ये तो वाज क्लियर जैश. ये तो हाँ. ठीक है. नाउ मे बी द अर्लियर लिंक आल्सो कुड हैव बीन जैश. जैश ने उसकी जिम्मेवारी नहीं ली थी. नोबडी टुक द जिम्मेवारी. बट इट्स आईसिस क्वाइट. आईसिस ने बोला हमने किया. ISIS also is based in Pak. तो वो कहाँ से आ रही है? वो आईसिस में से एक आईएस निकाल दो तो फिर बात वहां तो से ही वही आया. है. It is also based in Pak. जी. So I mean that is what Afghanistan is also telling Pakistan कि भैया you are providing shelter to ISIS. अफगानिस्तान ने ओपनली कहा है कि भाई you provide shelter to ISIS, we will do it to TTP. आप उनको कंट्रोल करो, हम इधर कुछ करेंगे. So that is on. Now here also they are blaming them. Automatically Pak has to be involved somewhere. कहीं कुछ प्लान दिखता है सर आपको आसिम मुनीर का? बिकॉज आई कांट सी इट. I don't know how much he's been able to get his hold on things क्योंकि these organizations एक बार आपने खड़ा कर दिया, they get out of your control. It is difficult for you to get them back under control. ये कहीं पर भी देखो, आप एक बार वो भूत खड़ा करोगे, it will get out. अब टीटीपी तो पाकिस्तान ने ही खुद क्रिएट किया था initially by the attack on the Lal Masjid. They could have eradicated it way back in 2007-8. नहीं किया. Today it has become a pain for them. तालिबान उन्होंने ही क्रिएट किया है. टुडे इट्स बिकम अ पेन फॉर देम. तो व्हेन यू क्रिएट सच मॉन्स्टर्स, दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल. तो खुद कंट्रोल करना मुश्किल है. बिकॉज कहीं तो सर मामला सेटल हो आपका, या तो बॉर्डर पे सेटल हो, या तो टेररिस्ट का के साथ सेटल हो, या तो आपकी पॉलिटिक्स सेटल हो, या इकोनॉमिक सेटल हो, या सरप्राइजिंग सिविल सोसाइटी सेटल सरप्राइजिंग हो. अगर आप देखो, पाकिस्तान की नेबर्स में से इंडिया इज अनहैप्पी टुडे, ईरान इज अनहैप्पी, अफगानिस्तान इज अनहैप्पी. आपके 3 बॉर्डर्स तो खराब है. बेसिकली व्हाट यू गॉट इज चाइना. आई मीन दिस इज योर स्टेटस. इट इज एक कंट्री के साथ हो तो मान लेते हैं. योर मेजर नेबर्स आर एंटी यू. दैट इटसेल्फ डिस्प्लेस कि आपकी पॉलिसीज क्या है. इंटरनली ऑल्सो सर देखिए, पहले भी पाकिस्तान इतने टाइम तक सर्वाइव कर रहा है क्योंकि एक सिविल सोसाइटी की जो एक देयर वाज अ ट्रस्ट कि यार फौज है हमारी, कुछ ना कुछ करके हमको इकट्ठा रखेंगे, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ, व्हाटएवर सेड एंड डन, देयर वाज अ लिटिल ट्रस्ट. द पीपल ट्रस्टेड द आर्मी वहां पर. एंड लोग तो खुश होते हैं आर्मी से हमेशा वहां पर, दैट्स देयर. तो बट वी सी दैट कहीं ना कहीं दैट वन लिंक विच इज देयर ना, आर्मी का जो एक वो बड़ा जबरदस्त लिंक था सिविल सोसाइटी के साथ, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है क्योंकि दैट लोग इज इस टाइम पे. जितना लिंक था, जो कोशिश थी, इमरान ने उसको पूरा खत्म कर दिया. Today, where the status is, the army is the most cursed organization.
उसके ऊपर सोशल मीडिया इज एडिंग फ्यूल टू फायर कि हमारे पास जो भी दिक्कत है दैट इज थैंक्स टू द आर्मी। पीओके गिलगित बल्तिस्तान में प्रॉब्लम है अगेंस्ट द आर्मी, उधर देखो खैबर पख्तूनवा में प्रॉब्लम है या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो बोलो अगेंस्ट द आर्मी, बलूचिस्तान में अगेंस्ट द आर्मी। सो पॉसिबली लीविंग आउट पंजाब, हर जगह इज एंटी आर्मी। नो, जिसको बाइंड करना चाहिए वो डिवाइड कर रहा है नेशन को। इफ द बाइंडिंग फोर्स इज डिवाइडिंग द नेशन, कब तक नेशन को इकट्ठा रखेगा? बाय फोर्स, एंड बाय फोर्स इट इज नॉट इजी। क्योंकि इट इज इसकी जो एक्चुअली ब्रेकिंग द पाकिस्तान नेशन। अब नाउ जो रोल रिवर्स हुआ है, सबको पता है नवाज शरीफ तो नेक्स्ट पीएम बनेगा। दैट इज नो, यू डोंट नीड रॉकेट साइंस टू नो दैट। अच्छा, अब नवाज शरीफ का काम होगा देश को एक साथ लाओ, और आर्मी का काम होगा देश को तोड़ो। Unluckily, it had so much of respect, slowly and steadily, by its policies, including the Imran Khan ouster and May 11th or Abhi Imran Khan in jail. It has actually lost the respect of the very people जिसके ऊपर वो अब जी रही। ये आपने जो चीज बोली है विद रिगार्ड्स टू सिविल सोसाइटी, और ये भी देखें सर, दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला भाई हम जा रहे हैं। अब लोग उनके ऊपर करप्शन केसेस डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं। ठीक है यार, पाकिस्तान में करप्ट कौन नहीं है? नहीं, बट इसलिए द पॉइंट इज करप्शन एक है, द मेन स्टोरी इज जो इन्होंने पॉलिसी रखी है कि जो रावलपिंडी बोलेगा एवरीबॉडी विल टो द लाइन। नाउ देयर आर सम हु आर नॉट विलिंग टू टो द लाइन। अगर वो लाइन को टो नहीं करेंगे, शुरू में जस्टिस ईसा आल्सो वाज अगेंस्ट टोइंग द लाइन। जब इमरान वाज द पीएम, उसके खिलाफ जो केसेस लगाए, अनलकीली वो प्रूव नहीं कर पाए, या ही माइट हैव changed his mind, I don't know. But Imran got after him because Bajwa wanted to get after him. Now, the point is, अगर आप इस तरीके से रन करो, then you may as well say Rawalpindi is the PM, the CM, the everything there. वैसे भी I've always said कि इस्लामाबाद is for photo ops, असली डिस्कशन होता है रावलपिंडी में। कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है दुनिया का जो पाकिस्तान विजिट करके इस्लामाबाद सीरियस डिस्कशन करे। He has to visit Rawalpindi. There is no dignitary, that is any other head of any state ka basic leader, who even head of state who comes into Pakistan, being head of state, the army chief will go and visit him and meet him, क्योंकि decisions वहां है। Islamabad is photo ops and implementing. Decision making is Rawalpindi. अब अगर ये स्टेटस है, क्या छुपा रहे हो? दुनिया को पता है। If the US Secretary of State, by chance, if he is to visit Pakistan, he will also say hello in Rawalpindi. There is no ambassador of a major country in Islamabad who has not called on to Rawalpindi. अब इस्लामाबाद इज जस्ट फोटो ऑप्स। अब पता नहीं लोग पागलों की तरह उस कुर्सी को क्यों छीन रहे हैं जब सिर्फ फोटो ऑप्स होना है। इसके अंदर सर यूएस का रोल थोड़ा सा देखते हैं, बिकॉज यूएसए ने, मेरे हिसाब से यूएसए ने पाकिस्तान को इंस्टिगेट किया कि थोड़ा ईरान में अपना आईएसकेपी वाले बच्चे को बोलो जरा कुछ करेगा वहां पर। तो रिटेलिएशन तो पाकिस्तान के ऊपर आ गया। Maybe, may not be, could be. I mean, there are so many things that we don't know, we speculate. जी। हो सकता है, हो नहीं सकता है, कुछ पक्का है नहीं। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जब विजिट हुआ उस समय द इजराइल हमास वॉर वाज ऑन, so the pressure as it is was being applied. Iran already has control over Hamas, Hezbollah and the Houthis, as also pro-Iranian militia in Iraq.
So it's quite possible यूएस ने बोला होगा, but ultimately if you act as an intermediary तो असर तो आपके ऊपर ही आएगा. अब Pakistan वही has been embarrassed by the attacks. They have to respond. If they don't respond and they only criticize, वो जो स्टैंडर्ड गुड ओल्ड इंडियन कस्टम ऑफ कड़ी निंदा, अगर वो कड़ी निंदा करेंगे तो फिर करते जाएंगे, अगला भी आएगा फिर कड़ी निंदा करेंगे. चलो हमसे तो एटलीस्ट वो डिजीज हटी वहां पर साइड में चली गई है तो बट आपने इमरान खान का नाम लिया कहीं ना कहीं इमरान खान की कोई यूटिलाइजेशन बची है सर आर्मी के लिए एक्सेप्ट कि वो 3 साल के साइकिल के बाद वापस ले आएंगे उसको बट कुछ उसका यूज है इज देयर एनी अदर यूज टीटीपी के साथ बात करने को तालिबान से बात करने कुछ यूज और है आर्मी को उसका कुछ है नहीं, बिकॉज एवरीथिंग दैट ही डिड वो आईएसआई के थ्रू कर रहा था. सो द गाय हु वाज स्पीकिंग वाज वो पुराना आईएसआई चीफ फैज. हम्म अब वो आउट है. अब अगर बात करनी है तो आईएसआई का अपना नेटवर्क है. इमरान खान per se has no major role, but the fact is आफ्टर ऑल पीएम रह चुका है, आप उसको निकाल सकते हो. यू पुट हिम बिहाइंड बार्स. एंड वेरी इंटरेस्टिंग, अब देखो व्हेन बांग्लादेश का इलेक्शंस होना था, द यूएस वाज कमेंटिंग दैट दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. ठीक है, ये ऑल पार्टीज आर नॉट कंपीटिंग, ऑपोजिशन के ऊपर पुलिस एक्ट कर रही है, ये वो, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, वी आर अनहैप्पी, पूरा कमेंट्स थे. और जब वही सवाल पूछा पाकिस्तान के बारे में, उसी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, we are not here to advise Pakistan as to how to run राइट its democracy. ठीक है, which automatically implies कि यूएस उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसलिए उसके ऊपर कमेंट नहीं दे रहा. हम्म So here is, I come back to your question. Did the US use Pakistan against Iran? Could be. Is the US using Pakistan against India? Seeks for justice आपके सामने है. The Khalistan kahani is running. Is it using it against the Taliban to keep them under pressure? ISKP है. So, unless a state is useful, why would it not? It will never हाँ get support. If it is useful, तो वो भी जो भी गलत कर रहे हैं, that is acceptable. ये वही पाकिस्तान है सर 2 महीने पहले जो बाइडन लिटरली कुछ करना ही नहीं चाह रहा था उस 2 साल पहले नथिंग एट ऑल दे डिडंट वांट एनीथिंग टू डू अभी विद भी कुछ खास नहीं है, पर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा. They're not letting the world criticize. जो पहले नहीं था तो एक पहले तो उनके सेफली पीछे कुछ ना कुछ होता था. Now हाँ nothing. No, I mean, a statement like this in the same press conference where you criticize Bangladesh and you say, we are not here to advise Pakistan on how to run its democracy. When आपने पीटीआई का सिंबल निकाल दिया, उनके सारों को अंदर बंद कर दिया, जब वो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो आप इंटरनेट कट कर लेते हो. अच्छा, एंड पाकिस्तान के अंदर सिंबल प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि 50% प्लस ऑफ द पॉपुलेशन इज रूरल, अनएजुकेटेड. वो सिंबल देख के वोट करते हैं. जब वो बैट नहीं है तो फिर कोई और सिंबल देख के वोट करेंगे. सो ऑल दिस हैज एन इम्पैक्ट, एंड दिस इज ऑल बीइंग डन इंटेंशनली एंड प्लान्ड. बिकॉज एक एक और चीज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी एंगल निकल रहा है पैसे तो यूएस से ही आएंगे चाइना ने तो देने नहीं उसको पैसे चाइना तो उनसे पैसे लेगा जो यूएसए देगा. हाँ तो वो लोन है तो रीपे करना ही है. लोन रीपे करना है लेकिन यूएसए के पैसे भी आएंगे आईएमएफ तो बोलता है भाई आप चाइना के पैसे वापस नहीं कर सकते वो तो कहते हैं, हम्म पर आगे से लिया, पीछे से कहीं दिया, कुछ ना कुछ तो करेंगे. दे हैव टू रीपे द इंटरेस्ट एटलीस्ट. या इसको इस्तेमाल करेंगे और अपना जो टैक्स इकट्ठा करेंगे वो देंगे, कुछ तो करेंगे. चाइना मुफ्त में तो एक कप चाय भी नहीं पिलाता. हाँ एब्सोल्युटली सर
तो आप बोल रहे हो से इमरान खान की वैल्यू है 3 साल के बाद उसको वापस लेके आएंगे? पॉसिबली, क्योंकि इनके पास हम्म। रोटेशन में यही 3-4 है। नवाज गया था, इमरान आया, दे ट्राइड इमरान, इमरान फेल्ड, अब नवाज को लाए, हाउ लॉन्ग विल नवाज बी हैप्पी विद देम, और दे विल बी हैप्पी विद देम, उसके बाद वो निकालेंगे। पॉसिबली उस समय तक बिलावल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो उसको एक छोटा मौका देंगे। बिकॉज एनी टाइम आप किसी को पीएम बनाओ, शुरू में मी एंड द आर्मी आर ऑन द सेम लाइन, 2 साल बाद उसको लगता है नाउ आई एम द पीएम, नाउ आई कैन टेक डिसीजंस। जहां उसको वो लगा 2 या 3 साल बाद उसको बाहर निकाल दिया। फिर अगला मुर्गा आया, वो भी 2-3 साल बाद अपना दिखाएगा आई कैन डू इट। जब तक जिसको निकाला है उसके 4-5 साल हो गए, वो कूल डाउन हो जाएगा एंड ही विल रियलाइज कि यार मैं पंगे क्यों ले रहा हूं, इफ आई वांट टू बी पीएम। वो वापस आएगा, फिर ये साइकिल रिपीट होगी। नवाज को 3 बार तो निकाल चुके हैं, चौथी बार आ रहा है या 5वीं बार आ रहा है, हर बारी क्यों तो आते हैं सर? निकाला। क्यों आता है वापस? आई मीन इफ आई वही वाज है हिम आई वुड जस्ट से यार छोड़ना है यार, रहने दो वहां पर ही। भैया, दैट इज द माइंडसेट। आई वांट टू डाई एज पीएम ऑफ पाकिस्तान, तो ठीक है भैया, आ जाओ। मार्टर सिम्पटम, हाँ, जो मार्टर भी है। सिंड्रोम। बट सर एक चीज है, जो भी कह लो, दिस डेस्परेट पाकिस्तान इज आल्सो डेंजरस पाकिस्तान। मैंने एक एक मेरा एक नो सेइंग है डाउट। जो जो थोड़ा स्प्रेड हुआ था, डेस्परेट मुनीर इज अ डेंजरस मुनीर। No, no. तो Any country which is pushed to the wall has to react. Today, the Pak army is being pushed to the wall, जी, right? It will react, and it will only react on its own populace. Kahin na kahin. You never know, even during elections. After all, the army is deployed. बांग्लादेश में आर्मी डिप्लॉय होती है, पाकिस्तान में आर्मी डिप्लॉय होती है, सिर्फ इंडिया नहीं करती आर्मी को डिप्लॉय। So somewhere something will go wrong because it cannot do anything outside. It doesn't have the resource. टैंक चलने के लिए तेल नहीं है, प्लेन फ्लाई करने के लिए तेल नहीं है। It doesn't have the resources. The problem is, where will it let it out? It will be on its own. दैट्स द थिंग, दैट्स अ क्वेश्चन सर। वे विल इट एक्चुअली, देखिए वो जो प्रेशर बिल्ड होगा कहीं ना कहीं तो फ्यूज फटेगा ना सर। वो तो होगा, एंड इट विल कम आउट ऑन इट्स ओन पीपल। कहीं ना कहीं तो करेगा वो। Somewhere or the other, it will have to do it. तो मेरे को ये बताइए सर, व्हाई वुड ईरान चूज बलूचिस्तान? No, that व्हाई is दैट where the एरिया? Jaish camps are. That is where the Jaish camps are. उनको कैंप हिट करना था, और जैश कहता है कि इट वाज एम्ड एट अस, इट मिस्ड द कैंप एंड हिट समवेयर। कह रहे हमारे, दे आर ओपनली एडमिटिंग ऑन ट्विटर, इट वाज एम्ड एट अस, इट मिस्ड अस एंड वेंट। बट जैश तो हो गया आईएसआई फिर से सर। है, वो हो गए, वेयर इज द डाउट? जब इमरान खान इज एडमिटेड इन तेहरान and Bajwa said we will take care of it, when he's admitted there that Iran is having problems with terrorist groups based in Pakistan, इमरान को गए हुए 3 साल हो गए टू तेहरान, you've done nothing, and ultimately they had to react. तो सबसे बड़ा नाइटमेयर किसका होगा सर इस चक्कर में? चाइना? मुनीर का है भाई, he's got to handle it, he's got to respond. If he बट doesn't चाइना का, respond, he'll become the चाइना विल laughing stock. यार ये क्या किया मैंने भाई, ये तो No, दोनों no, पागल हैं। China has already said both of you cool down. But the fact is, Munir has to show something. हम्म। He cannot just lump it. So let us see what he does. We wait. आपके हिसाब In में the next इलेक्शन होंगे few सर? weeks. हाँ जी, विल द इलेक्शंस हैपन सर? हाँ, इलेक्शंस होंगे। They've already said that we cannot do anything now. We cannot change the dates. Nothing can be done. Everything is on the roll. वो जो The सेनेट से process एक has रेजोल्यूशन started. आया You था, can't. Hmm? कि सेनेट से जो एक रेजोल्यूशन आया था कि बहुत ठंडो रखी है। नहीं नहीं, they have said we can do nothing now. So they'll do it. अच्छा, उनको पता है रिजल्ट, यार इलेक्शन करो ना करो, अभी अनाउंस कर दो रिजल्ट। फॉर्मेट उसने तो फॉर्मेट फॉर्मेट nobody's campaigning. How much do you read and park newspapers on campaigning for elections? हमारा 1 महीने पहले there would be fireworks all over यार। in campaigning. इनका कुछ नहीं है।
सबको पता है कौन आना है. Why waste money in campaigning? Everybody knows who's going to win. There is a tamasha going on. Campaigning तो हो ही नहीं रहा. हाँ, इट्स ब्लेटेंट ओपन. हाँ, नोबडी इज सेइंग वोट दो, ये वो, नथिंग. अब पेपर खोलो, आपको मिल जाना चाहिए by now a collection of ads, comments by people in political meetings. कुछ नहीं आ रहा. मैं वही मेरे को वही एक वो लगता है कि ये लास्ट मिनट कुछ एक बॉम्ब ब्लास्ट ब्लूज करा के, देखो जी हम करा नहीं सकते, बड़ा They will सिक्योरिटी not, सिचुएशन. because they would have already gone through so much of kharcha. You can't pull back. It's a waste of money. They will not risk it now. नॉट रिस्क इट नाउ. See, once the procedure starts, you begin the printing, you begin the process, you can't pull back. There's too much of money already going down the drain. एक तरफ और भी है सर कि कहीं ना कहीं चाइना, सॉरी, ये जो पाकिस्तान है वही गेम खेल रहा है अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की. चाइना को बोलता है मैं इधर पे आसपास हूँ, आई विल हैंडल इंडिया. यूएसए को बोलता है मैं इधर पे आसपास हूँ, आई विल हैंडल ईरान एंड चाइना. It can't, it can't. You see, geostrategic game is a different game. You need to have the economy to handle it. जब इकोनॉमी नहीं है, आप कहाँ से संभालोगे? You cannot do a major geostrategical any geostrategic action until you have the military power and the economy. दोनों नहीं है. Sometimes you really wonder, sir, how this country actually functions. It is surviving. It is surviving. यही एक एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इतना सब कुछ हो जाता है, लिटरली सब कुछ स्टैंड स्टिल बोलते हैं ना, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट टाइप है, पर चली जा रही है सर, चले जा रहा है, ठीक है. चले जा रहा है. Safe है, let it run as long as it is running safe. अपने आप को ही मारे मारने दो. सर अभी देखिए ये जो प्रॉब्लम मेरे को जो दिखती है, मैंने इसके ऊपर एक्चुअली आई स्पोक टू कर्नल अजय रैना आल्सो. मैं आई जस्ट वांट टू नो योर व्यूज, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन आएगी अभी, क्योंकि यू गॉट जूसी एसेट्स, टारगेट्स. 22nd को राम मंदिर का है, 26 को रिपब्लिक डे है. तो अगर पाकिस्तान को किसी तरह से पैसे चाहिए तो कुछ करेगा, बोलेगा देखो जी ईरान भी ठोक रहा है, भारत भी ठोक रहा है, पैसे दो हमको. नहीं, नहीं, nothing. It will not, because nobody will want anything to happen here which will further expand. क्योंकि अभी वैसे भी इजराइल हमास संभाला नहीं जा रहा, यूक्रेन रशिया नहीं संभाला जा रहा. Nobody will want anything here. And Pakistan is aware कि अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ, the retaliation is going to be super. So nothing. It will be kept very much well below any level of anger. तो आप भी तो you're also doing सर्वशक्ति ऑपरेशन पीर पंजाल के अंदर. That is okay. That has been done. That is done at periodic intervals. अभी तो बहुत सालों बाद कर रहे हैं, पहले भी हो चुका है. That is always being done. That is to flush out terrorists. Because क्या होता है, you apply pressure here, they go the other side. जब वहां पे pressure आता है, they come this side. So now when you do it from both sides, you don't have much of an escape route. It's a slow process. बहुत slow है, but it happens. बट जब पाकिस्तान की तरफ से एक डेंजरस गेम मैंने देखी है कि वो जो अभी दाऊद इब्राहिम का पूरा चीज फैली थी, दैट इज वेरी दिस थिंग दैट वाज See, स्प्रेड बाय आरजू. ठीक है, see, लोग कहते हैं, बट ये एक वो है कि क्योंकि ये कुछ यूट्यूबर्स ना नहीं. लोगों के घर में घुस गए हैं. नहीं, this is the way of doing it कि ये सब निकलता रहता है. You are playing these mind games. या If there's nothing else, then you play mind games. So, hey, best is to be ignored. एब्सोल्युटली, बट वो मास कैसे इग्नोर करेगा सर? कुछ नहीं हो जाता है. क्योंकि These are all games. मैंने भी इसके ऊपर पॉडकास्ट करा एंड आई सेड अगर वो गया है तो, अगर वो नहीं गया है तो. एंड बॉटम लाइन ये है कि अगर वो गया है या नहीं गया है, either ways पाकिस्तान will never say it. See, nobody will admit on either side because there are lots of people whom Pakistan cannot declare are on their soil. Yeah. Unluckily, if they go, they will go unsung. And the worst is a man who's done so much for that country will not be recognized after he goes. वही केस हफीज सईद का भी है सर. USA See, says he's in a 30-year imprisonment, लेकिन his son is fighting elections, and what imprisonment sir, वो तो अपने घर में बैठा है. that is how things are. Now, the question is, they're calling it
सिक्योरिटी इश्यूज है, जो भी है, द फैक्ट इज एज लॉन्ग एज ही डजंट इंटरफेयर ऑन अ लार्ज स्केल, तो हम्म। ठीक है। अब अभी ज्यादा कुछ मुंह भी नहीं खोल रहा। दैट प्रेशर इज ऑन पाकिस्तान टू कीप हिम अंडर चेक। गुड फॉर अस। So how do you see China Pakistan going forward, sir? Because this is another. They will continue. Nothing will change. Whoever comes in, nothing will change. You cannot change because you owe them too much. You're dependent on them for a lot, so nothing will change. Especially in the geopolitical sphere, you can be rest assured that China will continue backing Pakistan. वो वैसा का वैसा रहेगा। कोई भी आएगा, कुछ भी होगा, पाकिस्तान चाइना relations will be the same. So basically इंसिडेंट्स होते रहेंगे, एस्केलेटरी मैट्रिक्स ऊपर चढ़ती रहेगी, चाहे वो हमारे से हो, ईरान से हो, अफगानिस्तान से हो, जहां मर्जी से हो, थिंग्स विल स्टिल रिमेन स्टेटस को अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी अंदर से कोई चीज हो जो पूरी कंट्री को That हिला is, दे। and it will come. अपने आप रेस होगा। Problems are there. कहीं ना कहीं there will be the भड़क and things will suddenly build up. सो which is what brings me to the final part of this interview. What do you think that is, sir? हमने काफी कुछ कवर करा इस इंटरव्यू में। इफ यू सी ये छोटे See, छोटे। the amount of unrest in Balochistan will lead to them doing something in the rest of Pakistan. जी It could be suicide attacks, it could be in conjunction with the TTP, which has already got its tentacles. यहाँ तक कि TTP is spread into Punjab and Sindh. So, somewhere or the other, they will start this internal situation, which will be a major problematic situation to control. How much हम्म। they'll be able to control it, what is the repercussion in controlling it, wo aayega. Because the things are actually getting out of hand for these two communities, the Pashtuns and the Baloch. So एंड ये दो somewhere भी they will give it back. मिले हुए हैं सर। Somewhere they'll have to give it back. And when they give it back, that is where the problem will start. ये तो सारे मिले हुए हैं सर। दे आर नॉट, इट्स नॉट दैट दे आर सेपरेट। Huh, but then when they do something in a combined way in the interiors is where the problems will start. Because the retaliation internal hoga. Firstly, local retaliation by the civil community against the जी Pashtuns and Baluch, then the retaliation by the army. So, uske saath it will only go, it will blow and blow and blow. So, let's see how much it blows and how they do, how they handle it. लास्ट में सर सी देखिए आसिम मुनीर जो भी कह लीजिए, ही इज गॉट व्हाट आई थिंक अ ईयर लेफ्ट। एक साल बचा है उसका। Never look at it in time because it depends on him how long he wants to continue. तो एक्सटेंशन इज ऑन द मार्क। It's on his hands. जिसको पीएम बनाएगा वो एक्सटेंड करेगा, फिर उसको निकालेगा। कहानी वही है। साइकिल रिमेन्स। तो सर लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, व्हाट शुड वी डू? Nothing, relax and watch the fun. पॉपकॉर्न्स That लगा is के it. कुछ नहीं, शुरू watch हो the जाओ। fun. हाँ, बिकॉज सर see the way it unfolds. आई मीन as a power in this region and with this, ये जो भी एक कंट्री बोल लो, स्पेस, आई डोंट कॉल इट अ कंट्री सर। मैं पाकिस्तान को एक जगह बोलता हूँ। इट्स जस्ट अ space in the middle of India and the rest of the countries around. This space has the potential of exploding really badly. See, it should not implode. The fact is, it depends on how it handles itself. How much more do you want to suppress and push? क्योंकि जब भी आप population को you push them to a wall, Hmm. it bounces back. And that is what they're doing in to the Pashtuns and the Baluch. Somewhere it is going to hit back. Question is, when it hits back, how do you handle it? That is going to be the determining factor. Force on force never works. We've learnt it the hard way, which is why Kashmir is changed today. Even Northeast. All that is changed because we changed policies. जी They have yet to learn. They didn't do what they did in Bangladesh. They're almost repeating it in Balochistan and Northwest Frontier Province. Whether you call it Khyber Pakhtunkhwa, whatever it is, they're repeating it. The fact is, India was in between Pakistan and Bangladesh, whereas these two provinces are within.
बांग्लादेश could get out faster, they will take time. पर जब आप push करो, the retaliation becomes severe. There you had the Mukti Bahini, here you've got the Baluch and you've got the So TTP. many, so many. So it is actually what you're doing is a repeat of 71. The question is, how long are you going to push before it starts turning? So when I say sit back and watch the fun, watch it unfold. Because it's amazing what you've kind of described is a बड़ा ही unstable सा scenario, but आप Um, वहां पर but लोगों की it बात is सुने तो they have to they have to take a call as to how they're going to handle it. We can do nothing. अगर बट वहां पर लोगों की बात सुने तो they want to be treated like equals, they want to be That is all. See, quoted and when you don't give them the respect, which is what the mistake we initially made in Kashmir and we made in the Northeast, then we rectified. जी उसके बाद change आया. हाँ So you have to look at it. But if you don't work towards it, you believe in suppression like you did in Bangladesh, somewhere it has to hit back. so Asim Munir under pressure, will he fake a Absolutely. heart attack and run away? नहीं He's कुछ gonna he will, these generals don't have anything to lose. exactly, yeah. So on that note, sir, fantastic, nice talking to you always. We've actually done a very fantastic sort of a format today. We should do this for our future shows also. Short questions, short answers, and we actually covered through पूरा इधर उधर हमने paradigm cover किया है, and I'd really like to thank you for that, sir. Not And at all. Thank you, Adi. hope to see you soon back again. Yeah, Jai Hind. done. Thank you. Take care. Sir. Bye.